तो दोस्तों अभी निकल रहा हूँ मैं मुल्लेर मोरा हरगढ़ ट्रैक के लिए होटल से। चलो निकलते हैं। ट्रक देख सकते हो, सारे ट्रक्स यहाँ से ही आते हैं। अभी यहाँ से हमें ऑटो पकड़नी है मुल्लेर के लिए। चलते ऑटो के लिए, ऑटो देखते हैं कि ऑटो मिलती है कि क्या, टप्पर मिलता है, देखते क्या मिलता है। बैठ गया यहाँ पे, ये भाई साहब ने हमें लिफ्ट की। ट्रैक्टर वाले भाई साहब जा रहे हैं मुल्लेर। तो ये हमारे गाइड आ गए यहाँ पे। हाँ, भावदास पाटिल, और ये हमारे उनके भाई हैं, इनका नाम है कालू चौरे। तो अभी निकलते हैं फोर्ट के लिए। ये हमारे और पेपर खाली कर रहे। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। चलिए निकलते हैं। मुल्लेर विलेज जो आदिवासी विलेज है, तो यहाँ पे आ गए। देख सकते हो ये विलेज है यहाँ का, आदिवासी विलेज। ऐसा विलेजेस है यहाँ के आदिवासी। सभी जीवन में
तो गाइस ये रास्ता आप देख रहे हो, ये सीधा ऊपर जाता है जो मंदिर की तरफ जाता है, गणेश टेम्पल की तरफ। मगर हम थोड़ा सा शॉर्टकट रोड मारने वाले, जो हमारे गाइड को पता है। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, थोड़ा शॉर्टकट है जो डायरेक्ट टेम्पल के यहाँ पे शायद निकलेगा। लेट्स सी। पूरा रॉकी पैच है, रॉक पैच है पूरा, ऊपर जाता है। तो मैंने अपना GoPro माउंट कर लिया है हेड पे, चलते हैं। यहाँ आगे थोड़े से स्टेप्स ऊपर के लिए, स्टेप्स। बोल। हनुमान जी की और गणपति जी की मूर्ति है यहाँ पे। तो थर्ड गेट पे हम पहुंच गए। यह है तीसरा दरवाजा फोर्ट का। देख सकते हो। आता तो एक मोठा मंदिर आहे, बाबा राहतात. बाबा राहतात महाराजा. इमारतीला पाहून जावं आणि इकडेही रस्ते आई कोण जाते थकून जातात. डायरेक्ट खेळ आहे, पायऱ्या वेगळ्या आहे. म्हणजे इमारती आहेत तिकडून मग ते उजेड आहे ना, त्याच्यावरती उतरून ते खाली मोठा मंदिर आहे. मंदिरला पाहून यायचं इकडे खाली सगळे आंबे लागते. तो ये मामा ने हमें थोड़ा सा डिटेल बताया कि कहाँ पे क्या क्या है करके, ये मामा ने बताया. अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ. ये गणेश टेम्पल ना, गणेश मंदिर. कुठला देवाचं मंदिर आहे? हे कुठल्या देवाचं आहे? रामेश्वर. ये रामेश्वर मंदिर है आणि गणेश टेम्पल पण बोलतात ना, गणेश मंदिर भी इसको बोलते हैं. बड़ा सा झाड आहे ना, मोठा झाड आहे, त्याच्या अलीकडे देव आहे.